Because there has been many moments where I have said this line, मेरा हो गया, मेरा हो गया. हाँ. मेरा हो गया. I've said this n number of times, repeatedly, that too in a very like short span of time, back to back. बस we don't get that like drive to push yourself harder. मैं done हो गया बस, done, I'm done. कि अब वो जो एक aspiration थी. All right. Just close your eyes. Continue to repeat this. I'm done. I'm done. I'm done. मेरा हो गया. I'm done. जैसे भी आप बोलते हो. I'm done. आप सोचो आप सुखलीन को बोल रहे हो. So मेरा हो गया. I'm done. मुझसे और नहीं हो रहा है. I'm done. There's no point. I'm done. मेरा हो गया. I'm done. ये बॉडी में कहाँ फील हो रहा है? Somewhere in the head. कहाँ पे पॉइंट करो. Touch it. Somewhere over here. Somewhere over here. All right. Now imagine that you're wearing an ultraviolet glove that can go inside your body. आपके हाथ में आपने एक ग्लव्स पहन रखा है. कोई भी हाथ चूज कर लो. ठीक है. Now put that hand in your head and pull out that emotion. Physically? Physically कर लो अगर आपको वैसे देख के अच्छा लग रहा तो. You mean to say ऐसे Yeah, करके? just put your hand in your head and imagine you're pulling out that I'm done emotion right in front of you. उसको बाहर निकालो. What color is it? Kind of white. Okay. Tell that emotion to take a real form. उसको बोलो इंसान बन जा. एक रियल फॉर्म ले मेरे सामने जिससे मैं बात कर सकता हूँ. Has to make like a human being. No, it can be a light figure, but if you can speak to a light figure, say just take a form. Now ask the emotion, where are you coming from? And tell me the answer. It says that you've been doing a lot, thinking a lot about everyone, right? From your parents to your siblings to your spouse to your kid, and to the people whom you've been like serving. About कि जो तुझे एक पर्पस दिया गया था, क्या तो वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, जो तुझे गिफ्ट दिया तो नहीं कर पा रहा नहीं कर पा रहा है. You're not doing that much जितना तू capable है. That kind of guilt is there. All right. Now ask that energy to choose a number from 1 to 10 and give me the first number that you hear. 7. Now let that energy stay there and go back into your past and give me the most unpleasant incident that comes to your mind of your childhood when you were around 7 or 8. Nothing specific as such, which I can like recall maybe at 7 or 8. मुझे इतना याद नहीं आ रहा है कि at 7 पे क्या All हुआ, right. 8 पे At क्या हुआ. 15 or 16. I can see myself in class 10th, जहाँ पे insecurity है because as you know I've been a stammerer. Yeah. तो जब एक वाइवा होता है, I can like recall myself or like see myself in that chemistry lab, जहाँ पे शायद 10th या 12th. There's a chemistry lab जहाँ पे like वाइवा हो रहा है and board exams का वाइवा है. And I know the answer, which is the right answer. Still मैं बोल नहीं पा रहा हूँ and जो external आए हुए हैं वाइवा लेने के लिए मुझे like जज कर रहे हैं and like शायद इसको नहीं पता and they mark me down. And then I come out of the room and I feel like so guilty कि यार I knew the answer but I could not speak up and I lost the mark for something which I knew. And this is one like feeling कि मैं नहीं कर पाया जो जिसके लिए मैं capable था. This is one thing which just like popped up. Where do you feel this feeling in your body? Somewhere in the heart. Okay. Put a hand on your heart and say, I'm not enough. I'm not enough. Say it again, I'm not enough. I'm not enough. I don't like feel like saying this, but I'm being forced to say this. मैं बोल रहा हूँ आपके कहने बिल्कुल पर. बिल्कुल. वो पेन कर रहा है अंदर जब No. आप ऐसे बोल रहे हैं तो एक अंदर से एक रिटेलिएशन. Like more than this, I feel this like forehead is again जैसे कुछ like waves चल रही हूँ. And यहाँ पे कोई ऐसा कोई पेन नहीं हो रहा है जितना मुझे यहाँ पे फिर शायद like processing a lot of things in my head. तो यहीं पे मुझे फिर से फील हो रहा है.
as Okay. I keep my hand on my heart. All right. Now go back to that energy figure और उसको जाकर के बोलो कि ये जो इंसिडेंट मुझे अभी याद दिलाया है आपने, ये इंसिडेंट का मुझे क्या करना है. Surprisingly, that like figure जो सामने है खड़ी हुई वो कुछ नहीं like बोल रही है मतलब, but then if I get to hear some voice Yeah. as I heard the number 7 Yeah. like previously, Yeah. so like मॉकरी वाली आवाज़ है हंसने वाली कि let it be, तू देख तू कहाँ पहुँच चुका है आज. That was like one moment in your life which was there, so chill. So say that why am I holding on to this moment for so long? Sorry. उनसे पूछो why am I holding on to this moment for so long? What part of it I have to heal? अभी लग रहा है कि जो आवाज़ आ रही है क्या वो आवाज़ है या फिर just that my brain talking in my head. That is your conscious mind interfering with the process. It's okay. जब आप पहली बार ऐसा करते हैं तो होता ही है. आप बस वो आवाज़ सुनो, वो बोल रहा है या वो नहीं बोल रहा, या आपको लग रहा है आपका माइंड आपसे बात कर रहा है. Either ways, what are you? You are also spirit only, no? It's a very casual reply कि like छोड़ना यार हो गया chill. Okay. What are the emotions that are surfacing at the moment? Frustration. All right. To that figure that is there right in front of you, imagine that there is a white light that is coming straight from the heart of God or universe, and you ask that figure to go back into that light and say, I've understood my lesson here and I'm going to use it in my near future. But now I don't need you. And see that energy going back to the light. और आप अपने फोरहेड पे हाथ लगा करके जो भी उसका रेजिड्यू है वो भी आप उस लाइट में भेज सकते हैं. Whatever, like pull out all the rest of the cords that you feel are there, all the heaviness that you feel is there, and just keep sending it to the light. And say, I've learned my lesson. Keep repeating it to your body that I've learned the lesson, but I will use it in my own time. I'm thankful that this happened, and I know now what to do and what not to do. Till the time you feel that your head is empty of that particular cord. Take a deep breath. Tell your forehead, thank your forehead that it was holding on to such an uncomfortable emotion for so long. Take a deep breath again, and when you feel comfortable, you can open your eyes. क्या देखा आपने? अब बहुत कुछ होल्ड करके चल रहे हैं. कुछ एपिसोड्स हैं सैडनेस से रिलेटेड, कुछ एपिसोड्स हैं गिल्ट से रिलेटेड, जहाँ आपसे कुछ ऐसा हुआ है, किसी इंसान को कुछ आपने हर्ट कर दिया, वो चीज़ आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर. वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ आपसे, बट और वो चीज़ शायद सामने वाले ने फॉरगिव कर भी दी है, लेकिन आप उसको कैरी कर रहे हैं अभी तक अपने अंदर. सप्रेशन बहुत ज़्यादा है. एंड वो जो एक इंसिडेंट आपने बताया, जो स्टटरिंग वाला जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट है, और उससे रिलेटेड जो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, all of that has caused a major suppression and led to that one statement which is your belief system that I am not enough. तो अब वो I am not enough जो है वो I have to prove myself में चला गया है. तो I have to prove myself that I'm a better husband, I'm a better father, I'm a better entrepreneur, I'm a better podcaster, I'm a better speaker. वो जॉनर में चला गया है. और क्योंकि वो इतने सारे जॉनर में चला गया है,
तो जो आपने ये स्टेटमेंट शुरू करी कि मैं अब थक गया हूँ सब कुछ कर करके, ये सब कुछ बन बन के, उसका जो रूट कॉज है वो है आई एम नॉट इनफ. The only thing that you have to heal in your system is regarding this is I'm not enough. I'm not enough is self-judgment and self-sabotage, where people have told you over and over again through their eyes, through their behavior, through their words that you will not be able to do anything in life because you stutter. एंड आपने उस चीज़ को एल्कमाइज कर दिया कि ये पेन को तो मैं कन्वर्ट करके छोड़ूंगा, मैं तो करके ही दिखाऊंगा. आप बॉब द बिल्डर बन गए. लेकिन तो अब अच्छा उस हुआ ना? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. लेकिन उसके अंदर आपने अपने आप को बहुत ब्रो बीट किया. आपने वो जर्नी प्यार से नहीं अपने साथ निकाली, आपने अपने आप को मार पीट के निकाली है.